So today I'm gonna tell you how to tighten your Suzuki GIXXER 155cc or SF version or the naked simple version chain, which is a very simple thing and it will take only a few minutes. So you need a 15 size 15 nut key for the left one and around 22 pan or key for the right one. Alright, you have to hold both of them together, just like we have a pan here and a key here, and then you have to rotate both of them in anti-clockwise direction. Like from the left side, the anti-clockwise will be the up side. You just fix it like this here so that the nut does not move freely, and you will loosen the nut from this side. जब आप नट को इस तरफ से ढीला करेंगे तो इस हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नट को आप स्थानीय रखेंगे. You put it stationary here stiffly, and then from this side you rotate it like anti-clockwise. घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे इसे और उसकी गिनती कर लीजिए and count the turns you take to lose it. After that, you tighten this small nut here. Alright, and it takes in it the 10 number key. The same way, now to tighten it up, you need to rotate every nut clockwise. Every nut or bolt, हर नट और बोल्ट को घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ता है उसे टाइट करने के लिए. Tighten it like I counted 4 turns. Similarly, you tighten this one घड़ी की दिशा में. दिमाग में चित्र में सोच लीजिए घड़ी की दिशा में टाइट करने के लिए और घड़ी से उल्टी दिशा में खोलने के लिए. Clockwise to tighten, anti-clockwise to loose or open the nut. So I have already done it, and the free play in the chain का ढीलापन कम से कम 3 सेंटीमीटर तक. The chain free play should be at least 3 centimeter or approximately the width of your 2 to 3 fingers. We will see it. This you have to adjust with swing. Do not tight the chain too much like this thing. That will lead to the problem in changing gears. And do not let it loose so much, which is the problem after every around 30 to 35 days. ढीले होने से चेन स्लिप हो सकती है, निकल सकती है और एकदम से टायर जैम हो सकता है. Can lead to the tire jamming problem, can slip off in between the ride if the chain is loose. So this much free play is nice. I'm gonna tighten it much, like I just want this much free play. So let's do it. I'm counting it. 1, 2, 1, 2. अंदाजे से, with approximation. The chain actually has become too stiff. I found while tightening, टाइट करते समय मैंने पाया कि राइट साइड वाला नट ज़्यादा फोर्स से टाइट हो रहा था. With excess force, the right nut was getting tightened. So as the chain has got more stiff than it is needed to be, chain ज़रूर से ज़्यादा टाइट हो गई है.
तो मैं राइट साइड से थोड़ा सा लूज कर दूंगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, बाय टर्निंग द नट एंटी क्लॉकवाइज। I'm gonna check the full play. पहले से बहुत बेहतर हो गया है। एंटी क्लॉकवाइज। Now as my chain has got set it as per the tuning I wanted, जैसी मैं ट्यूनिंग इसकी चाहता था वैसी सेट हो गई है चेन। ये बिल्कुल 1 2 3 इसमें पूरा लूजनेस स्टिफनेस सब बराबर है चेन की। मैं इसको अब टाइट कर दूंगा। ओके मेरा की मैन घड़ी की दिशा में घुमाएंगे टाइट करने के लिए।
So everything is done now. Tighten them up. Equal charge.